Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss a new topic about the concept of utility. This is a very important concept in economics. Today I will discuss what actually the utility means and the concepts of utility, that is the total utility and marginal utility, and how we estimate marginal utility from the total utility. वो आज हम डिस्कस करेंगे। जहां तक कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी का ताल्लुक है, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। जब हम युथेस का कमोडिटी यूज करन, का चीज यूज करन, तथ कमोडिटी मज कचा सलाहियत छ आसन अख इंसान सेटिस्फाई करनुक, सो वनो यह हसा छ अमि कमोडिटी हंस यूटिलिटी। और जो ये यूटिलिटी है, इट इज मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। यस यूटिलिटी छ ये छ मेजर गसन कार्डिनल नंबर्सन मज। दैट मीन्स लाइक 1 2 3 4 5, और इनको यूटिल्स कहते हैं। यस ये यूटिलिटी शिवन मेजर करनी है कार्डिनल नंबर्स मज 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। जहां तक यूटिलिटी का ताल्लुक है, तो यूटिलिटी के दो कंसेप्ट्स हैं। यूटिलिटी इज अ कंसेप्ट, अख छु टोटल यूटिलिटी एंड द सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या गो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या गो, ये समझाओ। जहां तक टोटल यूटिलिटी का ताल्लुक है, टोटल यूटिलिटी टीयू इज टोटल यूटिलिटी। अब जो कंज्यूमर है वो बहुत सारी कमोडिटीज इस्तेमाल करता है, या सह कमोडिटी ूंठ ज त्रे खेवान, या त्रेश गिलास ज त्रे चावन, और ये डिफरेंट सेटिस्फेक्शन हासिल करता है फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन, मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन। जो एक कंज्यूमर टोटल सेटिस्फेक्शन हासिल करता है, टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ, from the consumption of a given unit of a commodity, total satisfaction जो इससे हासिल होती है। लेट अस सपोज एक कंज्यूमर ने 2 यूनिट्स ऑफ एक्स इस्तेमाल किए, 2 यूनिट्स ऑफ एक्स कर तम इस्तेमाल या यूज करिए खे, इमिस मिले सेटिस्फेक्शन 2 यूनिट्स ऑफ एक्स इस्तेमाल करें, लेट सपोज 10। और जब इसने यूनिट ऑफ 3 ऑफ कमोडिटी एक्स इस्तेमाल किया, ये त्रेयम वन कमोडिटी यूज कोर, इमिस मिले लेट सपोज 9। You see 10 plus 9 it gives 19. This is the total utility. Achwanan ऐसा गई total utility means total satisfaction. Yes, some total satisfaction that the consumer gets from the consumption of all units of a commodity. Second concept is marginal utility. Marginal utility kath वनो is? Marginal go additional utility. Additional, it means additional utility. Yes, additional utility छु हासिल गसन अकिस कंज्यूमरस from the consumption of, येल सु कंज्यूम छु करन अख कम, one more or one less unit of a commodity। येल सु ज्यादा या कम कमोडिटी छु, येल सु एडिशनल कमोडिटी छु यूज करन, तमिस यस एडिशनल सेटिस्फेक्शन छु हासिल गसन सु कमोडिटी यूज करित, तथ वनो अस हसा गई मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, if the consumer uses 10 units of a commodity of x और टोटल यूटिलिटी गई हासिल अमिस 100, अगर वह कहिम
यूनिट ऑफ एक्स कोर इस्तेमाल कह यूनिट ऑफ एक्स कोर इस्तेमाल इमसंस टोटल यूटिलिटी गई इंक्रीज फ्रॉम 100 to 105 यतस कोर अकुई यूनिट ऑफ एक्स इस्तेमाल गो 10 कर वन कर कह 10 पे 100 टोटल यूटिलिटी युथि मैं वन मोर कोर यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी गई इंक्रीज फ्रॉम 100 to 105 you say addition go one more in this additional utility that is up to 5 this is the marginal utility you see allow this the marginal utility hekiu to measure karit a simple formula total utility n minus total utility n minus 1 that means tun nimhone se 100 tun minus 1 nimhone minus 105 sorry tun nimhone se 105 minus tun nimhone 100 105 करो we subtract 100 तै द्राव 5 this is the marginal utility marginal utility कथ पट हेको अस estimate करित from total utility बह हेकि एक टेबल के जरिए तो समझो एक टेबल के जरिए से मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं let us suppose these are the different units of commodity that a consumer consumes 1 2 3 4 5 units of x when the consumer consumes 1 units of x जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है एक यूनिट ऑफ एक्स लेट अस सपोज ही गेट्स द टोटल यूटिलिटी 8 इससे पहले इन्होंने कोई कमोडिटी कंज्यूम नहीं की तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8 क्योंकि यहां पे फॉर्मूला है TUN माइनस TUN माइनस 1 यही इस्तेमाल करनी है पद युथि हम दोयम कमोडिटी ऑफ एक्स को इस्तेमाल इमसंस टोटल यूटिलिटी गई इंक्रीज फ्रॉम 8 to 14 लेट अस सपोज मार्जिनल यूटिलिटी क्या नेरी 14 अस करो अस माइनस 8 तै द्राव 6 दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी युथि वन त्रेम यूनिट ऑफ एक्स कोरम इस्तेमाल इमसंस यूटिलिटी गई इंक्रीज फ्रॉम 14 to 18 तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या नेर तिल 18 minus 14 is equal to 4 and when the consumer consumes 4 units of x and he gets total utility 20 the marginal utility is 20 as करो इस minus 18 तो वहां क्या निकला this is 2 and fifth point is युथि वनी 5 unit of x को यूज इस्तेमाल तो जो लेट सपोज टोटल यूटिलिटी रूज 20 as करो इस minus 20 तो जो marginal utility है वो 0 निकली so this is how you can derive the marginal utility from total utility my dear viewers tomorrow we will discuss about the relationship between total utility and marginal utility graphically मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा रिलेशनशिप टेबल के जरिए से भी दिखाऊंगा और थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा कि रिलेशनशिप क्या है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में थैंक यू वेरी मच